वेसु हेडगेवार नगर में गणेश उत्सव के दौरान मनपसंद गीत न बजाने पर 2 युवकों ने धार्मिक पोस्टर फाड़ दिए और 3 दुकानों के पोस्टर, सीसीटीवी व टेम्पो के शीशे तोड़ दिए, जिससे लगभग 30,000 रुपए का नुकसान हुआ। फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। घटना की जानकारी स्थानीय निवासी धनराज गवाई ने 100 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम को दी थी। वेसु पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। सुमन सागर अपार्टमेंट के कैमरे में एक शख्स कैद हुआ। पूछताछ में उसने पोस्टर फाड़ने वाले 2 युवकों के नाम बताए। पुलिस ने शैलेश उर्फ नारियल भरत बारिया और शिवा सन्यासी नाहक को गिरफ्तार किया है। शैलेश पेट्रोल पंप पर काम करता है, जबकि शिवा बेरोजगार है। 4 दिन पहले दोनों युवकों का विवाद अन्य युवकों से हुआ था, जब गणेश जी की मूर्तियों के आगमन पर मनपसंद गीत नहीं बजाए गए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार वेसु पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस इंस्पेक्टर जे.आई. पटेल ने बताया कि शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई और 2 संदिग्धों से पूछताछ की गई। फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। આજે સુરત સિટીના વેસુ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સવારે 2 થી 9:45 કલાકની સમયગાળા દરમિયાન વેસુના હેડગેવર નગર ખાતે ધાર્મિક પોસ્ટર ફાડી નાખવા બાબતની જાહેરાત થયેલ હોય અને આ બાબતની જાણ થતાં પોલીસ સ્ટેશનના સર્વેલન્સ સ્ક્વોડના કર્મચારીઓ સીસીટીવી ચેક કરવા અને લોકોના નિવેદન લેવા ચાલુ કર્યા અને આમાં હકીકત સામે આવી કે આ 2 આરોપીઓ શિવા નાહક અને શૈલેષ બારિયા આ લોકોએ કોઈ વર્ગના લોકોના ધર્મના અપમાન કરવાના ઈરાદાથી ગણપતિ ભગવાનના પોસ્ટર અને આજુબાજુના દુકાનોના અને બાકી પોસ્ટરો આ લોકો ફાડી નાખ્યા। સાથે સાથે આ લોકો હેડગેવર નગરની બાજુમાં પાર્ક કરેલ એક 4 વ્હીલ ગાડી તથા એક ટેમ્પોના કાચ પણ તોડી નાખ્યા અને આશરે 30,000 જેટલાનું નુકસાન કરેલ હોય। तो आ बाबत भारतीय न्याय संहिता 2023 कलम 298, 324(2), 351(2) અને 54 મુજબની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે।